Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are doing good. Okay, and hope you all are taking your daily routine lectures and you are doing your works very well. Okay, open your book, page number 33 of unit number 3. Previously, we have read about the two friends, Grace and Britha, how they are going to enjoy their vacations and where they live, how they become friends, and for how long they are friends, right? So now we will come to the Grace story. How delightful it must be to have friends like that, to love you एंड प्लान फॉर यू सेट ग्रेस ग्रेस कहते हैं कितना अच्छा लगता है जब आपके कोई ऐसे दोस्त हों जो कि आपके लिए प्लान करे, ठीक है. वेस्टफुली आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन. चलो मुझे लगता है कि तुम इंशाल्लाह बहुत अच्छी वेकेशंस गुजारोगी. बैठी एज फॉर मी आई एम गोइंग इन टू क्लर्क्स मैन्स बुक स्टोर अनटिल स्कूल रीओपन्स. वो कहती हैं कि मैं तो किसी क्लर्क मैन के वो जा रही हूँ, बुक स्टोर में जा रही हूँ जब तक स्कूल खुल नहीं जाता. एंड क्लर्क मैन ने मुझे कहा है, आज उसने कहा है कि वो एग्री है मुझे अपने साथ ले जाने पे. बट आई लुक सरप्राइज, शी डिड नॉट नो दैट ग्रेस वेकेशन प्लान्स वो, ठीक है. अब वो सरप्राइज हो, उसको तो नहीं पता था कि ग्रेस के वेकेशन प्लान्स ये हैं. I don't think you ought to do that, Grace. मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे करने की ज़रूरत है, Grace. She said thoughtfully. उसने सोच के कहा. You are not strong and you need a good rest. तुम इतनी strong नहीं हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है. It will be awful trying to work at clerk's man's all summer. बहुत तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत अजीब हो जाएगा कि तुम पूरी गर्मी की छुट्टियों में क्लर्क्स मैन के पास काम करोगी. There is nothing else for me to do. मेरे पास करने को और कुछ नहीं है, said Grace. Grace बोलती है, trying to speak cheerfully. बहुत अच्छे से मूड में वो बोल देती है. You know I am as poor as the proverbial church mouse. कहते हैं मैं इतनी गरीब हूँ जैसे कि एक चर्च का चूहा. Betty, and the simple truth is that I can't afford to pay my board all summers and get my winter outfit unless I do. I shall expect long newsy letter from you telling me all your fun, passing your vacations on to me at second hand. You see, well, I must set to work at those algebra problems. I tried them before dark, but I couldn't solve them. My head ached and I felt so stupid. How glad I shall be when exams are over. ठीक है, वो से कहती है कि मुझे तो इन फीस बोर्ड की न्यू फीस देने के लिए आई हैव टू अर्न, मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है. लेकिन कहती मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे, मेरी ये तवक्का है कि तुम जिससे वेकेशंस जिस तरह से एंजॉय करोगी, मुझे एक लॉन्ग लॉन्ग लेटर लिखोगी तो मैं वो रीड करके ही एंजॉय कर लूँगी. उसके अलावा कहती है मैं कल रात को अलजबरा के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे नहीं होते, मेरा सर दुखने लगा है, ठीक है, और मुझे अपना बहुत अजीब लग रहा था. कहती मैं शुक्र करूँगी कि बस ये एग्ज़ाम्स हो जाएं और ख़त्म हो जाएं. सपोज आई मस्ट रिवाइज द सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग, सेड ब्रिथा एब्सेंटली. ठीक है, ब्रिथा एब्सेंटली कहती है मुझे भी सीनियर इंग्लिश पढ़नी है इस शाम को. But she made no move to do so. She was studying her friend's face. How very pale and thin Grace looked, surely much paler and thinner than when she had come to the academy, and she had not by any means been plump and rosy then. ठीक है, कहती है उसने तो कहा कि मुझे रीडिंग करनी, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त का चेहरा देख रही थी जो कि बहुत जर्द और कमज़ोर हो चुका था. वो सोच रही थी कि वेकेशंस के बाद जब मैं आऊँगी तो ये तो और भी जर्द और पीली हो चुकी होगी, ठीक है, और फिर कोई मुझे नहीं लगता कि इसका फेस उस तरह प्लम्प होगा, खूबसूरत हो जाएगा, रोज़ी गुलाब की तरह सुर्ख. I believe she could not stand 2 months at clerk's man's, thought Bertha. If I were not going to Aunt Meg's, I would ask her to go home with me, or even if Aunt Meg's had room for another guest, I would just write her all about Grace and ask I could bring her with me. Aunt Meg would understand, she always understands, but she hasn't, so it can't be. क्या हुआ कि अब उसने कहा कि
क्लर्क्समैन के साथ 2 महीने काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो कहती है कि या तो मैं ऐसे करूँ कि मैं आंट मेग्स के साथ ना जाऊँ और अपने घर जाऊँ, साथ में इसको भी ले जाऊँ, या फिर मैं उनको भी लेटर लिखूँ। अगर इनके पास एक और एक्स्ट्रा रूम आ जाता है तो मैं इसको भी अपने साथ ले जाती हूँ, क्योंकि आंट हमेशा समझती हैं हमें, और वो इस दफ़ा भी समझेंगे। ऐसा कभी ना हुआ कि वो ना समझे। जस्ट देन अ थॉट darted into Beth's brain. What's nonsense? She said aloud so suddenly and forcibly that Grace fairly jumped. What is? वो कहती ये क्या बात हुई। वो इतना तेज़ी से बोलती है कि ग्रेस परेशान होती, कहती क्या हो गया। ओह नथिंग मच, कुछ ज़्यादा नहीं, बेटा बोलती है उसको। Getting up brusquely, see her, I'm going to get to work. I have wasted enough time. ठीक है, enough time. वो कहती है कि अब मुझे काम के लिए जाना है, मैंने काफ़ी टाइम ज़ाया कर चुका है. She curled herself upon on and divan and tried to study her senior English, but her thoughts wandered hopelessly, and finally she gave it up a despair and went to bed. There she could not sleep. She lay awake and wrestled with herself. It was after midnight when she sat up in the bed and solemnly, I'll do it. अब वो पढ़ तो रही है लेकिन उसके माइंड में बस वही उसकी अपनी फ्रेंड की सिचुएशन आ रही है। वो यही सोच रही है कि मैं क्या करूँ उसके साथ। फिर वो सोचती है अचानक मिडनाइट में आधी रात वो अपनी जगह पे उठ के बैठ जाती है, कहती है कि मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं ये करूँगी। नेक्स्ट डे बेथा wrote a confidential letter to Aunt Meg. She thanked her for her invitation and then told her about Grace. अब अगले दिन वो उनको लेटर लिखती है, ठीक है, छुप के, कॉन्फिडेंशियल छुप के, जब उसकी आइडेंटिटी नहीं वो, ठीक है, ग्रेस से छुप के, और सब कुछ ग्रेस से को बता देती है। And what I want to ask Aunt Meg is that you will let me transfer my invitation to Grace and ask her to go to Riversdale. It's L-E-U-K, Riversdale, this summer in my place. Don't think me ungrateful. No, I'm sure you won't. You always understand things, but you can't have us both, and I have rather Grace should go. I will do her so much good, and I have a lovely home to my go-to, and she has none. वो उसे कहती है कि क्या आप मेरी जगह पे ग्रेस को बुला सकती हैं। मैं नाशुक्री नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे बुलाया एन्जॉयमेंट के लिए, लेकिन कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि वो भी इंजॉय करें। मेरे पास जाने को एक बहुत अच्छा घर है जहाँ पर मैं जा सकती हूँ, लेकिन ग्रेस के पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे समझे, मेरी जगह पे आप ग्रेस को बुला लें, ठीक है। टर्न योर पेज। Aunt Meg understood as usual and was perfectly willing, so she wrote to Bertha and enclosed a note of invitation to Grace. वो मान गई, ठीक है। I shall have to manage this affair very carefully, reflected Bertha. Grace must never suspect that I did it on purpose. I will tell her that circumstances have prevented me from accepting Aunt Meg's invitation. This is true enough. No need to say that circumstances are hers, not mine. And I'll say I just asked Aunt Meg to invite her in my place, and that she does done so. When Grace came home from her history examination that day, Bertha told her that the story and gave her Aunt Meg's cordial note. You must come to me in Bertha's place, wrote the letter. If I feel as if I knew you from her letter, and I will consider you as a sort of honorary niece, and I'll treat you as if you were Bertha's herself. Isn't it splendid of Aunt Meg? Said Bertha diplomatically. Of course you'll go, Grace. अब क्या होता है कि आंट उसकी बात समझ जाती हैं, वो उसको लेटर लिखती हैं, ठीक है। लेटर लिखने के बाद वो उसे कहती हैं कि ग्रेस अब तुम आओगी, तुम बेहतर की जगह पे आएगी, और मैं तुम्हें उसी तरह ट्रीट करूँगी जैसे मैं उसको ट्रीट करती थी। तुम दोनों मेरे लिए सेम हो। तो वो उसको डिप्लोमेटिकली आंसर करती, तुम्हें जाना चाहिए, बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए, जब उसने तुम्हें इतने प्यार से बुलाया है। ओह आई डोंट नो, अच्छा मुझे नहीं पता था, सेड ग्रेस इन
बेविल्डरमेंट, ठीक है, उसने एक लॉस होके उनको आंसर दी कि मुझे तो नहीं पता। आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो विद हर? तुम्हें वाकई लगता है कि तुम नहीं जाना चाहती हो? इंडीड, मुझे पता है, आई डोंट वांट टू गो, ड्रेडफुली सेड बर्था, फ्रैंकली मैं जाना चाहती हूँ। वो उसको बोलती है, बहुत अच्छे से बोलती है कि क्यों नहीं मैं जाना चाहती, बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे कि मैं तुम्हें बताया कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड एंड मेक्स मस्ट नॉट बी, लेकिन अगर मैं डिसअपॉइंट हुई तो मेरी आंट डिसअपॉइंट नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट गो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। ग्रेस एंड दैट इज़ ऑल देयर इज अबाउट इट, और यही सब कुछ है इस बारे में कि यू मस्ट गो, तुम उसको डिसअपॉइंट मत करो। इन द एंड ग्रेस डिड गो, आखिर में ग्रेस जाने लगती है। अ लिटिल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल, थोड़ी सी परेशान होती है और शक भी होता है कि क्यों, बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप द ड्रजरी ऑफ द काउंटर एंड द नॉइस एंड हीट ऑफ द सिटी। लेकिन वो चली जाती है, ठीक है, वो इनकाउंटर कर देती है इस हीट से, सिटी की लाइफ से तंग होकर वो उधर उनके पास जाना चाहती है। वो घर चली जाती है, फीलिंग लिटिल bit blue in secret, it cannot be denied, but also feeling quite sure that if she had to do it all over again, she would do just the same. This summer slipped quickly by and finally 2 letters come to Bertha, ठीक है, समर ख़त्म हुआ और अब क्या हुआ कि बेर्था के पास लेटर आई। वन फ्रॉम आंट मेग एंड अदर फ्रॉम ग्रेस, एक उसको आंट लिखती हैं, उसको एक अपनी फ्रेंड ग्रेस लिखती हैं। आई हैव हैड लवली टाइम, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। एंड ओ बैटी, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? आई एम टू स्टे हेयर, मैं यहाँ पर रुकूंगी हमेशा के लिए? ओह ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, मैं अगले मंथ स्कूल जा रही हूँ, बट दिस इज़ टू बी माई होम आफ्टर दिस। एंड शी मेक्स मी कॉल हर दैट आई सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड। एंड आंट्स मेगलेटर वॉज पैराग्राफ। अब देखिए वो उससे कहती है कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहोगे। अब देखिए वो लिखती क्या है। Grace is writing to you and will have told you that I intend to keep her here. You know I have always wanted a daughter of my own, but my greedy brothers and sisters would never give me one of theirs, so I intend to adopt Grace. She is the sweetest girl in the world, and I am very grateful to you for sending her here. And will not know her when you see her. She has grown plump and rosy. Bertha folded her letter up with a smile, and I have walked delightfully, feeling that I am the good angel in a storybook, she said. Now see, क्या हुआ कि वो वहाँ पे जाती है, सो कोई नहीं होता, लेकिन आंट उसको अडॉप्ट कर लेती है एज अ डॉटर। अब वो उनके पास रहेंगे तो उसको अच्छा फील होता है कि उसकी वजह से कुछ अच्छा हुआ और इसको एक फैमिली मिल गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टू फ्रेंड्स। होप यू एंजॉयड योर लेक्चर। इंशाल्लाह ऑन नेक्स्ट lecture we will start another one. Hope so you understand, and do read your chapters again after this recorded lecture, please. Have a good day, enjoy your day, bye.